to the lecture series for class 9th. This is fourth part of the fundamental unit of life. In today's video, we'll talk about cytoplasm and the cell organelles. What is cytoplasm? Cytoplasm is the liquid content. It is the fluid inside the plasma membrane. It fills the entire cell. It contains many cell organelles which are performing specific function for the cell. Okay, there are different functions. Division of labor is up to mark. So each organelle is supposed to perform a specific function for the cell. These are enclosed by membranes. All the cell organelles are double membrane bound structures. And as we have discussed that earlier in the previous video, prokaryotes, they do not have a well-defined nuclear region. They also do not have any of these membrane bound cell organelles. It is a characteristic feature of eukaryotic cell that they will have a well-defined nuclear membrane. They would also have membrane enclosed organelles. And the presence of this membrane is so important. The significance of membrane is shown with an example of viruses that they do not have any membranes, and therefore they do not show characteristics of life until they infect a cell. In order to multiply, in order to reproduce, these viruses have to enter a living cell, whether it is a bacteria or a plant cell or an animal cell or a human cell. It has to enter a living body to use the cellular machinery of this cell in order to multiply and uh, replicate. This is a typical example of an animal cell which shows presence of plasma membrane as an outermost covering that surrounds the cytoplasm, and it separates cytoplasm and other of the cell constituent from the cell exterior. Inside cytoplasm, you'll find number of cell organelles, starting with nucleus that we have already discussed earlier, that contains chromatin and nucleolus and is covered with the nuclear envelope. Then we have endoplasmic reticulum, both rough and smooth. We also have got peroxisome. We have got vacuoles, mitochondria, Golgi apparatus, lysosome, and constituents of cytoskeleton, all lying there in the cytoplasm. So let us talk about cell organelles now. In a eukaryotic cell, a number of chemical activities are taking place all the time. These are required to support their complicated structure and function, especially if they are part of a multicellular organism. Now, these activities are specific. They are different from each other, and they are performed by numerous membrane-bound organelles. Some of these organelles are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, and plastids. A lot of these membrane-bound organelles are very small in size, and therefore they can be visible only with an electron microscope. Let's begin with endoplasmic reticulum. It's a large network of tubes and sheets, and it looks like long tubules, vesicles, bags, or pouch-like structures. These are membrane-bound structures, and the membrane of endoplasmic reticulum is much similar to the structure of plasma membrane. That is, it is made up of a double layer covering. The appearance of endoplasmic reticulum, it varies depending upon the cell, but wherever it is present, it will always form a network system, a mesh-like system, because it has to connect everywhere. There are two types of ER. It is RER, that stands for rough endoplasmic reticulum, and SER, that stands for smooth endoplasmic reticulum. RER is named so because it appears rough under a microscope due to presence of these small ribosomes attached on its surface. Smooth endoplasmic reticulum, they do not have ribosomes attached onto their surface, and therefore they appear smooth under a microscope. Ribosomes that are attached to RER, they are sites for protein synthesis. Proteins are synthesized over ribosomes.
Ribosomes help in a process known as translation, where they read the code from messenger RNA and translate it to protein. And when proteins are synthesized in the lumen of RER, they are sent to various places in the cell depending upon the need. Here is an electron micrograph of SER and RER. Here, under microscope, ribosomes are present on the surface of endoplasmic reticulum, so it appears rough. This is RER. And here, there are no ribosomes attached to the surface. This is SER. Now, what is the function of SER? SER is supposed to manufacture fat or lipid molecule. Now, some of these proteins that are produced in RER and lipids that are produced in SER, they help in the synthesis of cell membrane. And this process is known as membrane biogenesis. What is the what are the functions of endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum, it serves as channel for the transport of material, especially protein, because RER is involved in protein synthesis. So after its synthesis, it is transported between various regions of the cytoplasm from one place to the other place, or from the cytoplasm to the nucleus. It also functions as the cytoplasmic framework, and it provides a surface for some of the biochemical activities to take place. In liver of vertebrates, SER also helps in detoxification of many poisons and drugs. Next is Golgi apparatus. The person, इसको Golgi body भी कहते हैं. The person who described Golgi apparatus first is known as Camillo Golgi, और उनके नाम पर ही इस organelle का नाम Golgi apparatus पड़ा. Now this is a system of membrane bound vesicles. इसमें vesicles होते हैं जो कि membrane double membrane से covered होते हैं, and these appear as flattened sac or disc like structure. These are arranged parallel to each other, और it has got polarity. इसका direction होता है. इसमें एक तरफ cis phase है, next दूसरी ओर trans phase है. Now it has got incoming transport vesicle to the cis phase, और trans phase की तरफ से outgoing transport vesicles निकलते हैं. These flattened sac-like structure, these are known as cisterns. And the membranes, they also have connection with the membranes of endoplasmic reticulum. So therefore, together they constitute another portion of a very complex cellular membrane system. Now, because Golgi apparatus and endoplasmic reticulum, they together constitute a complex membranous system, ये दोनों एक साथ secretory pathway में काम करते हैं. So whatever material is synthesized in the endoplasmic reticulum, it is packed and dispatched to the various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus. तो जो भी मटेरियल यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, you can see that this is a rough endoplasmic reticulum, and protein is being synthesized due to the presence of ribosomes attached on its surface. These proteins, they are sent through transport vesicle to the cis phase of Golgi cisterna. ठीक है, यहाँ से ये it will get according to the programming, जो भी सेल की प्रोग्रामिंग है, the type of protein that is being sent, ये या तो स्टोर हो जाएंगे, या इनका मॉडिफिकेशन होगा, या फिर इनको पैक कर दिया जाएगा वेसिकल्स में फॉर इट्स डिलीवरी टू द टारगेट रीजन. तो here the protein is being transported, or it passes through the various stacks or the various cisterna of Golgi apparatus, and it is modified in the due course, और उसके बाद उसको secretory vesicle में enclose करके cell exterior में भेज दिया जाता है, because the protein was destined to be transported to the outside of cell. इसी तरीके से कुछ ऐसे भी सिंपल शुगर्स होते हैं जिनको Golgi apparatus में complex sugar में convert किया जाता है. Golgi is also involved in formation of lysosomes. Next are lysosomes. These are special type of cell organelles because they are filled with digestive enzymes. ये भी membrane bound structures होते हैं, double membrane bound structure. This is an image of a yeast cell, and a lot of other organelles are shown. Here is the lysosome. These are small structures.
इनको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है, बिकॉज दे कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल दैट गेट्स इनसाइड द सेल। और जो सेल में वर्न आउट ऑर्गेनल्स होते हैं, जो पुराने हो गए हैं, उनका लाइफ स्पैन पूरा हो गया है, सो दीज ऑर्गेनल्स आर आल्सो डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम्स। सो एनी फॉरेन मटेरियल दैट एंटर्स इनसाइड द सेल, जैसे वो अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो कोई फूड, उनका फूड मटेरियल हो सकता है, या अगर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे ह्यूमंस की, तो हमारे बॉडी में एंटर करने वाले कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी वायरस हो सकता है, तो या फिर सेल के अंदर का ही कोई ओल्ड ऑर्गेनल, ये सब कुछ लाइसोसोम में जाकर के डाइजेस्ट हो जाते हैं। उनके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को या बहुत बड़े पॉलीमर को छोटे छोटे मोनोमर में ब्रेक कर देता है। ठीक है, दीज एंजाइम्स आर सपोज टू डाइजेस्ट, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि वो हमारे कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल है, जो हम लोग खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इन द सेम वे लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, दे विल आल्सो कन्वर्ट ऑल द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू इट्स सिंपलर फॉर्म। This is how a lysosome is capable of digesting any foreign material. Here a bacterium that is represented with a red circle, it enters inside the cell through a process known as phagocytosis and forms phagosome. इसको food vacuole भी कह सकते हैं. Now lysosome gets fused with phagosome forming phagolysosome, और because lysosome के अंदर digestive enzymes है, they will digest the bacterium, उनका complete digestion हो जाएगा, they will break down everything that is there in the bacterium, और जो भी उससे डेब्रिस निकलेगा, जो भी नहीं यूज में आने वाली चीजें हैं, उन सब को सेल से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा थ्रू अनदर प्रोसेस नोन एज एक्सोसाइटोसिस। Therefore, lysosomes are capable of breaking down all the organic material. लेकिन lysosomes को हम लोग सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। So why is it known as suicide bags? Because ये सेल के डेथ में भी काम करता है, सेल को भी, सेल अपने आप से सुसाइड भी कर सकता है ड्यू टू लाइसोसोम्स। हाउ? एट टाइम्स कभी कभार सेल में इंजरी हो जाती है, सेल डैमेज हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में लाइसोसोम्स बर्स्ट ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, उनका मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन हो जाता है और सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर निकल जाएंगे और ये सेल के कंटेंट को खुद ही डाइजेस्ट कर लेंगे। So therefore cell will die off, and therefore we can call it as suicide bag of the cell. Brain-bound organelle of a eukaryotic cell is mitochondria. These are popularly known as powerhouses of the cell. इनमें दो कवरिंग्स होती हैं, the outer membrane which is porous and the inner membrane which is not so porous but is deeply folded. इसमें बहुत सारे folds होते हैं जिनको क्रिस्टी कहा जाता है. These folds are to increase the surface area because inner membrane is the site for chemical reactions that are required for generation of ATP. ATP क्या है? ATP is adenosine triphosphate, and this is a form of energy that is required for all the chemical activities that take place inside the cell. ATP is known as energy currency of the cell. हमारी बॉडी में एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर किया जाता है और इस स्टोर्ड एनर्जी का यूज न्यू केमिकल कंपाउंड के सिंथेसिस में, किसी के ब्रेक डाउन में, कुछ मैकेनिकल वर्क करने में किया जाता है, जैसे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल. Now, if you look into this anatomy of mitochondria, you will see that there is an outer membrane that contains pore. यहाँ पे pores दिखाए गए हैं. Then we have inner membrane that is folded to in the form of cristae. और यहाँ पर कुछ ऐसे ये ATP synthase टाइप के कुछ enzymes हैं जो कि ATP के generation में काम करते हैं. Now inside we also have matrix, और matrix में we have got mitochondrial DNA और हमें ribosomes भी नजर आ रहे हैं, these molecules. So mitochondria is unique in a sense that they have their own DNA and ribosomes. और इसी
कारण they are capable of synthesizing their own proteins. जैसे ribosomes attached to RER can synthesize proteins for the entire cell. Similarly, some of the proteins can be synthesized inside mitochondria. Next are plastids. These are only present in plant cells. ये animals में नहीं पाए जाते. There are two types. पहला है chromoplast, that is colored plastid. मतलब इनके अंदर कुछ colored pigments पाए जाते हैं जिनकी वजह से they appear colored. Next is leucoplast, which are white or colorless plastids. इनमें कोई कलर नहीं होता है. This example, the photograph in front of you is cells containing leucoplast जो कि colorless white type का दिख रहा है. Now ऐसे chromoplast जिनके पास green color का chlorophyll pigment होगा उनको हम chloroplast बोलेंगे. और chloroplasts बहुत important organelles हैं because they are required for photosynthesis in plants. Photosynthesis आपको पता होगा that it is a process that is required by plants to make their own food. लेकिन क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल के अलावा कुछ और पिगमेंट्स भी होते हैं जो कि येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं. नाउ ल्यूकोप्लास्ट ये ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर स्टार्च या ऑयल या प्रोटीन इस तरीके के ग्रैन्यूल्स को स्टोर करके रखा जाता है. सो दे प्राइमरीली ये स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है. क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है. यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है. If you look into its organization, you will see that chloroplast is also double membrane bound structure. इसमें भी एक outer membrane होता है और एक inner membrane होता है. उन दोनों के बीच में जो space है that is known as intermembrane space. और उसके अंदर जो material है, the material filled inside chloroplast is known as stroma. ठीक है. Stroma के अंदर there are many things. There are thylakoids. थैलाकॉइड ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनमें क्लोरोफिल्स होते हैं. एंड देन यू आल्सो हैव गॉट सम राइबोसोम्स एंड डीएनए. सो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास भी डीएनए और राइबोसोम है. सो दे आर आल्सो केपेबल ऑफ मेकिंग सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन. बाकी मोर और लेस इसका स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया से काफी हद तक मिलता है. Next are vacuoles. Vacuoles are used as storage sac. इनको solid या liquid content को store करने के लिए यूज किया जाता है. एनिमल सेल्स में बहुत ही छोटे साइज के वैक्यूल्स पाए जाते हैं और प्लांट सेल्स में बहुत लार्ज वैक्यूल्स मिलते हैं. Actually, these large vacuoles are characteristic feature of plant cells. ये इतने बड़े होते हैं that sometimes they can also occupy almost 50 to 90% of the plant cell volume. इनमें लिक्विड कंटेंट या सॉलिड कंटेंट ये कंप्लीटली फिल्ड होता है तो दे कैन आल्सो प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. बहुत सारे सब्सटेंसेस इसमें स्टोर किए जाते हैं इन प्लांट वैक्यूल्स. जैसे कुछ अमीनो एसिड स्टोर किए जाते हैं, कुछ शुगर्स भी स्टोर होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स, इन सब को यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है. There are some other types of vacuoles like food vacuole found in amoeba. अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और जैसे यहाँ पे एक फूड वैक्यूल दिख रहा है, ये अमीबा कुछ भी कंज्यूम करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस दैट आई हैव शोन देयर इन लाइसोसोम. वो फूड वैक्यूल की तरह बन करके सेल में डाइजेस्ट होता है. Now there is another type of vacuole जो कि कुछ specialized vacuoles होते हैं unicellular organism में. They are important because they help in expelling excess water and waste from the cell, like these contractile vacuoles shown here. जैसे ये paramecium है, this also comes from the same group where amoeba is placed. और इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर के रेगुलेशन में कितना पानी अंदर आएगा, कितना बाहर जाएगा और एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज सेल डिवीजन. व्हाट इज सेल डिवीजन? इट इज डिवीजन ऑफ अ सेल टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स. लेकिन इसकी जरूरत क्या है? व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? It is required for the growth of organism,
ताकि डिवाइड करके एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करे। जैसे कि एक न्यूबॉर्न बेबी जब वो उसकी बर्थ होती है तो वो बहुत छोटा होता है साइज में, उनमें सेल डिवीजन होता है, ग्रोथ होता है, तो वो एक छोटा बच्चा वो बड़ा होकर के अडल्ट ह्यूमन बनता है। उसी तरीके से अगर कभी किसी सेल में इंजरी हो जाएगी या उसकी डेथ हो गई तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी नए सेल्स का बनना जरूरी होता है। थर्ड इज फॉर रिप्रोडक्शन टू टेक प्लेस। रिप्रोडक्शन के टाइम में गैमेट फॉर्मेशन के लिए भी सेल डिवीजन होना इंपॉर्टेंट है। नाउ सेल डिविजन्स आर ऑफ टू टाइप। दो तरीके से सेल डिवाइड कर सकता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में सेल का डिवीजन ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए किया जाता है, टिश्यू का ग्रोथ एंड टिश्यू का रिपेयर। और एक सेल डिवाइड करके दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में बट जाता है। जो क्रोमोसोम नंबर मदर सेल का होगा वही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स का भी होगा। अगर क्रोमोसोम किसी भी, जैसे ह्यूमन के सेल में मदर सेल में क्रोमोसोम का नंबर 46 है, ठीक है, तो जब इसका डिवीजन होगा टू डॉटर सेल्स में तो ये बट करके जो दो नए डॉटर सेल्स बनेंगे इनमें भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है। और इसी वजह से हमारी पूरी बॉडी में जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, उन सब में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। लेकिन मियोसिस, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर गैमेट फॉर्मेशन। इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कुछ सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स, जो कि डिवाइड करके गैमेट्स फॉर्म करते हैं और गैमेट के फर्टिलाइजेशन से, इनके फ्यूजन से फिर ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। Meiosis में there are two consecutive divisions, meiosis 1, meiosis 2, और इनमें दो की जगह चार नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और इन चारों सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। मदर सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, जैसे कि ह्यूमन सेल में नॉर्मली जो सोमैटिक सेल्स हैं हमारे उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इनसे दो की जगह चार सेल्स बनेंगे, ये चारों गैमेट्स हैं और हर एक गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर 23 होगा। इट वोंट बी 46, इट विल बी 23, सो इट इज हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर दैट इज प्रेजेंट इन मदर सेल। दिस इज नोन एज meiosis. Let us compare the different ways of cell division. The first one shown here is binary fission. यहाँ पर this is exclusively found in unicellular organism. Bacteria and amoeba are the examples. यहाँ पे DNA का replication होता है. Now in जब मैंने nucleus पढ़ाया था तो nucleus में I told you that it plays a very important role in reproduction of cell. तो फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए कंटेंट बिटवीन द टू सेल्स, ये डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है, अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी होती है, सो दैट इट कैन बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू सेल्स, ठीक है। नाउ इन माइटोसिस अ डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड इज फॉर द टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे आप देखो चार क्रोमोसोम्स हैं, दो रेड कलर के, दो ग्रीन कलर के, दे गेट यू नो they go through different phases of mitosis and eventually two cells are formed, each having the same number of chromosomes that the parent cell was having, ठीक है, that the mother cell was having. और फिर meiosis में there are two consecutive divisions. पहले डिवीजन के बाद you see दो सेल बन गए और इन दो सेल में फिर एक सेल का ही डिवीजन दिखाया जा रहा है, तो एक सेल से फिर दो सेल्स बने, दोनों सेल्स से मिला करके फिर चार सेल्स बनेंगे, ठीक है। दीज आर गैमेट्स। ये गैमेट फॉर्मेशन के लिए ही मियोसिस को यूज किया जाता है। तो चार गैमेट्स होंगे और आप गैमेट में देखो वन रेड एंड वन ग्रीन कलर्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब है कि जो ओरिजिनली मदर सेल में चार क्रोमोसोम्स थे, डॉटर सेल में वो घट करके सिर्फ दो रह गए हैं। सो the chromosome number is half of what is found in mother cell, right? So now that is all. In next video we'll talk about the next chapter. Thank you.